In this lecture, we are going to discuss human reproductive system. Human reproductive system are the important system that play an important role in the process of the reproduction that is used for the production of the offspring to increase the number of the species. So, human reproductive system, there are two types of the reproductive system: male reproductive system and the female reproductive system. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों डिफरेंट हैं। ये वो वाहिद सिस्टम है जो मेल और फीमेल में कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। बाकी अदर सिस्टम की अगर हम बात करें उसमें माइनर डिफरेंस हो सकता है, वो तकरीबन सिमिलर होते हैं, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोथ सिस्टम, दोनों मेल और फीमेल दोनों सिस्टम रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मेल are mainly responsible for the production of the sperms and female are used for the production of the eggs, and male hormones and female hormones, these both are the basic requirement for the process of the fertilization, then the different developmental stages and that are used for the embryonic development. Human reproductive system. The reproduction is the process by which organisms make more organisms like themselves. Reproduction वो process है जिसमें कोई भी organism अपने number को increase करता है, अपनी जैसे produce करता है. But even though the reproductive system is essential to keeping a species alive, reproductive system का जो basic mechanism है, जो basic importance है, it is used for the alive, for the maintenance of the species. Unlike other body systems, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू कीपिंग एन इंडिविजुअल लाइफ। ये इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है या जो रिप्रोडक्शन है, ये स्पीशी की सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई भी इंडिविजुअल, उसका अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल नहीं है, ही आर शी कैन सर्वाइव, लेकिन वो स्पीशी प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, ये एक उसका ड्रॉबैक होगा। लेकिन सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट यूजफुल। इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, टू काइंड्स ऑफ सेक्स सेल्स और गेमीट्स आर इन्वॉल्व्ड। दो सेक्स सेल्स, दो गेमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। द मेल गेमीट आर स्पर्म एंड द फीमेल गेमीट, द एग और ओव्यूम, मीट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल बोथ आर द बेसिक रिक्वायरमेंट of the fertilization. When sperm fertilizes an egg, this fertilized egg is called zygote. जब egg और sperm फ्यूज होंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं fertilization। उसका रिजल्ट क्या, उसका रिजल्ट होगा zygote formation. This zygote goes through a process of becoming an embryo and developing into fetus. ये zygote, इसमें फिर developmental changes होंगी, उससे embryo बनेगा, उससे फिर fetus बनेगा। The male reproductive system and the female reproductive system both are needed for reproduction. दोनों जरूरी हैं, दोनों का फंक्शन होना भी जरूरी है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं हम। ऑर्गन सिस्टम बाय विच ह्यूमंस रिप्रोड्यूस एंड बियर लाइव ऑफस्प्रिंग, प्रोवाइडेड ऑल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, इसमें तमाम ऑर्गन्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड, तमाम नॉर्मल होने चाहिए, एंड फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, और तमाम ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हो। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन आर, कौन कौन से? लिबरेशन ऑफ एन ओवम और एग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान स्पेसिफिक टाइम में एग और एग या ओव्यूम का प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूम बाय स्पर्मेटोजो और स्पर्म फर्टिलाइजेशन, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जिसमें स्पर्म का रोल है, ये जरूरी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूम टू द यूट्रस और वॉम, जो फर्टिलाइज ओव्यूम है उसकी ट्रांसपोर्ट होना भी जरूरी है, वो वॉम या यूट्रस तक उसका पहुंचना जरूरी है। इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, द अर्ली एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज ओव्यूम इन द वॉल ऑफ यूट्रस। इम्प्लांटेशन मीन द taking place of the blastocyst at its specific location in the uterus. Formation of a placenta and maintenance of the unborn child during the entire period of gestation. Placenta की formation भी बहुत जरूरी है, जो उसको food provide करेगा। Birth of the child and expulsion of the placenta, and suckling and the care of the child with an eventual return of the maternal organs to virtually their original state. तो ये सारी हमने summary discuss की है जो
sperm cell reproduction, spermatogenesis, egg cell की production, oogenesis, then fertilization, उसके बाद फिर embryo का blastocyst का बनना, blastocyst का plant होना, फिर plant होने के बाद फिर उसमें developmental changes का होना, फिर placenta का बनना, फिर parturition, birth of the child, and these are different stages. इन तमाम stages के लिए, इन तमाम functions के लिए reproductive systems का function होना जरूरी है. Male reproductive system पे बात करते हैं. The male has reproductive organs or genitals that are both inside and outside of the pelvis. The male genitals include the testicles, testes, the duct system, which is made up of the epididymis and the vas deferens, the accessory glands, which include the seminal vesicles and prostate gland, and the external genitalia. These are different parts of the male reproductive systems. These parts are may be present external to the body, and some parts or some ducts may be present internal to the body. Testes. Testes are the pair of testes that are mainly found external to the body. They play two major functions. To testes dual function perform करते हैं. Testes endocrine gland के तौर पर काम करते हैं. The testes are responsible for the production of different types of hormones. जो sex hormones हैं, जो male sex hormones हैं, mainly these are produced by the testes. और testes का जो second important function है वो sperm production है. तो दो major functions हैं testes के. To produce sperm by meiotic division of germ cells within the seminal vestibules. अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि sperm cell कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? seminal vestibules में प्रोड्यूस हो रहे हैं. seminal vestibules कहाँ पे हैं? testes में. And to synthesize and secrete androgens that regulate the male reproductive function. तो दूसरा फंक्शन क्या है? हार्मोन secrete करना. हार्मोन कौन सा? एंड्रोजन. The site of production of androgen is Leydig cells that are located in the interstitium between the seminal vestibules. तो Leydig cells are responsible for the production of the androgen hormone. ये कहाँ पे होते हैं? ये seminal vestibules के between में interstitium में होते हैं. Testicles hang in a pouch called structure outside the pelvis called the scrotum. वो pouch जो उसको cover करता है, that is called the scrotum. This bag of skin helps to regulate the temperature of the testicles, which need to kept cooler than the body temperature to produce sperm. तो mainly इसका function क्या होता है? वो cool रखते हैं, that are responsible for the production of the sperm. Epididymis. Epididymis is a long whitish mass of the tightly coiled tube. The sperm that are produced in the seminal vestibules flow into the epididymis. वो epididymis में flow होंगे. During passage via the epididymis, the sperm undergo maturation and are concentrated by the action of ion channels located on the apical membrane of the epididymis. वो वहाँ पे मेच्योर होंगे, उसमें फिर वहाँ पे मुख्तलिफ और केमिकल फ्लूइड ऐड होंगे, उसमें फिर फाइनली सीमन बनेगा एट द एंड में. वास डिफरेंस आल्सो नोन एज द स्पर्म डक्ट इज अ थिन ट्यूब अप्रोक्सीमेटली 30 cm 0.98 feet long that starts from the epididymis to the pelvic cavity. It carries spermatozoa from the epididymis to the ejaculatory duct. वास डिफरेंस का क्या फंक्शन है? स्पर्मेटोजोआ को एपिडिडिमस से एजाकुलेटरी डक्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है. Accessory glands. 3 accessory glands provide fluids that lubricate the duct system and nourish the sperm cells. They are the seminal vesicles, prostate gland, and bulbourethral glands. जो sperm होता है वो cells होते हैं सिर्फ. अब उसमें जब सिक्रीशन मिल जाती है, उसमें फ्रक्टोज मिल जाता है, उसमें फ्लूइड मिल जाता है, तो दैट विल फॉर्म द सीमन. तो इट विल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन. तो कौन कौन से एसेस्ट्री ग्लैंड्स हैं? नंबर 1 सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूथ्रल ग्लैंड, दैट इज आल्सो कॉल्ड कॉपर ग्लैंड. Cowper's gland. Urethra. The urethra is the channel that carries the sperm in fluid called the semen to outside the body through the external genitalia. तो urethra mainly carry करने के लिए इस्तेमाल होता है. जो फाइनल हमारे पास सीमन प्रोड्यूस हुआ है उसको external genitalia के थ्रू. The urethra is also part of the urinary system because it is also the channel through which the pee passes as it leaves the bladder and exits the body. So it is also the part of urinary system during which the urine pass out of the bladder. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैविंग डिफरेंट पार्ट्स. तो हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल पार्ट्स भी होते हैं, इसके इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं. इसमें जो मेजर रोल होता है वो टेस्टिस का होता है. पेयर ऑफ टेस्टिस दैट आर प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द बॉडी दैट आर कवर्ड बाय द स्क्रोटम. टेस्टिस हैव द इंटरनल स्ट्रक्चर दैट हैविंग द सेमिनल वेस्टिब्यूल्स एंड द लेडिक सेल्स एज वेल. इसका जो टेस्टिस
से जो स्पर्म को कलेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड द एपिडिडिमस। एपिडिडिमस के बाद जो ट्यूब होती है दैट इज कॉल्ड द वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है, कैरी करती है। ये मुख्तलिफ जो ग्लैंड्स हैं, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स के ऊपर काम करते हैं, हमने डिस्कस किया कि सेमिनल वेसिकल है, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है और कॉपर्स ग्लैंड है। ये उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। देन सीमन प्रोड्यूस होते हैं और सीमन देन एंड travel with the help of the urethra out of the to the external regions. So these are different parts of the male reproductive systems. Role of the male reproductive system. Role of the male reproductive system may make semen, transfer of the semen into the reproductive system for fertilization, produces sex hormones which help a boy develop into sexually mature man during the puberty. These are mainly different functions performed by the male reproductive systems. The mainly semen production and the hormones that are responsible for the sperm productions. Female reproductive system. The female reproductive anatomy includes both external and internal structures. इसमें भी internal और external structures होती हैं. External genitalia of the female include the external genitalia are known as the collectively vulva, and it consists of the labia majora and labia minora, the clitoris, the female genital or the vaginal orifice, the vestibule, the hymen, and the vestibular glands, that is also called Bartholin's gland. These are the external genitalia of the female reproductive tracts. The internal reproductive organs of the female reproductive system include the genitalia, uterus, two uterine tube, two ovaries. Genitalia. The genitalia is the canal that joins the cervix, the lower part of the uterus, to the outside of the body. It is also known as the birth canal. Uterus womb. The uterus is a hollow, pear-shaped organ that is the home to developing fetus. तो मेनली जो fetus develop होता है, जो ब्लास्टोसिस implant होता है, वो uterus में आकर implant होता है. The uterus is divided into two parts. इसके दो parts होते हैं. Cervix, which is the lower part of that opens into the genitalia, and the main body of the uterus called the corpus. Fundus भी बोलते हैं उसको. The corpus can easily expand to hold a developing baby. A canal through the cervix allows sperm to enter and the menstrual blood to exit. तो इसके दो फंक्शन होते हैं, एक स्पर्म को एंटर करता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव साइकिल में रिस्पांसिबल फॉर द एग्जिट ऑफ द ब्लड. लेयर्स ऑफ द यूट्रस में तीन लेयर्स होती हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम. दीज लेयर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द इम्प्लांटेशन. ये ब्लड रिच होती हैं, ये न्यूट्रिशन रिच होती हैं, जो पहले से प्रिपेयर होती हैं फॉर द रिसीविंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, फॉर द to welcome the blastocyst and to mature or to develop the blastocyst into the fetus, embryo then fetus. Ovaries, most important, are the basic reproductive organ है, female reproductive organ है. ये इसके भी दो फंक्शन हैं, ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है और एग्स भी प्रोड्यूस करती है. The ovaries are small oval shaped glands that are located on either side of the uterus. तो दो ovaries होती हैं, pair of ovaries होती हैं either side of the uterus. These ovaries are found. The ovaries produce eggs and hormones. Eggs भी produce करती हैं और hormones भी produce करती हैं. Fallopian tube. Fallopian tube. These are narrow tubes that are attached to the upper part of the uterus and serve as a pathway for egg cells to travel from the ovarian to uterus. तो ये जो zygote बनते हैं उसको ट्रेवल करने में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फिलोपियन ट्यूब के ही कॉर्नर पे होती है. देन द फर्टिलाइजेशन डन हो जाती है. देन द zygote ट्रांसफर टू द यूट्रस. फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय स्पर्म नॉर्मली अकर्स इन द फिलोपियन ट्यूब. फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है? फिलोपियन ट्यूब में हो रही है. द फर्टिलाइज्ड एग देन मूव्स टू यूट्रस वेयर इट implants टू द यूट्रीन लाइनिंग. Female reproductive system, pair of ovaries present on either side of the pelvic cavity. Fallopian tube responsible for the migration of the egg and for migration of the fertilized zygote. Uterus that is responsible for the implantation of the blastocyst, and the cervix and the female genital tract. तो uterus के mainly two parts होते हैं. इसमें एक cervix होता है और दूसरा इसमें corpus होता है. तो मेन फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? ओवरी परफॉर्म कर रही हैं, जो एग भी प्रोड्यूस कर रही हैं और साथ हार्मोन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं. द फंक्शंस ऑफ द फीमेल जेनिटल female reproductive system are formation of ova,
रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ओवा प्रोड्यूस करना, स्पर्मेटोजोआ को रिसीव करना, प्रोविजन ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी चूंकि इंटरनल हो रही है तो सूटेबल एनवायरनमेंट होगा तो फर्टिलाइजेशन होगी। फीटल डेवलपमेंट के लिए भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इट प्रोवाइड ए सूटेबल एनवायरनमेंट। पार्चुरेशन, दैट इज द चाइल्ड बर्थ, इज आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ different hormones. Lactation is the production of the breast milk, which provides complete nourishment for the baby in its early life. That's all about the reproductive system. We have discussed both male and female reproductive system. इनका जनरल हमने ओवरव्यू लिया। दोनों में जो बेसिक रोल है कि वो एग भी प्रोड्यूस हो और फीमेल की तरफ से और स्पर्म भी प्रोड्यूस हो, दोनों की यूनियन भी हो, फर्टिलाइजेशन भी हो, देन इम्प्लांटेशन भी हो, और देन डेवलपमेंट भी हो, देन एट देन पार्चुरेशन हो। तो these are different factors that are controlled by both male and female reproductive system. दोनों सिस्टम का फंक्शनल होना जरूरी है। दोनों फंक्शनल होंगे तो फंक्शनल एग और फंक्शनल स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। जब फंक्शनल एग और फंक्शनल स्पर्म प्रोड्यूस होंगे तो नॉर्मल जाइगोट प्रोड्यूस, जब नॉर्मल जाइगोट प्रोड्यूस होगा तो नॉर्मल डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द gametogenesis or and spermatogenesis and the oogenesis. Thank you so much.